Hey guys, and I welcome all of you to this video. So in this video, we are going to discuss about the interview questions of the Accenture. As I had already shared in the last video, the complete and whole process of how the recruitment drive for Accenture has been there and कौन-कौन से steps होते हैं. So today we are going to discuss about कि what questions they have asked in the interview and how I gave the answers to the questions and the best way to give the answers to these questions. So you know that Accenture recruitment drive have 4 stages. First stages is you have to register yourself on their portal either through your college or through their website. Second is your aptitude and coding test. If you qualify both, you are called for the communication assessment, which is a AI software based assessment. And the last stage is interview stage, and this interview is more like HR interview. They are not expected you to गिव मोर टेक्निकल क्वेश्चंस बट एचआर इंटरव्यू रहता है. बट ऐसा कुछ नहीं है. मेरे फ्रेंड को जो सेम डे इंटरव्यू हुआ था, पहला क्वेश्चन था एक्सप्लेन द क्लाउड आर्किटेक्चर मॉडल. सो दे can shock you with their questions, but mostly the questions are HR questions. So my interview was on 29th August at 10:20 a.m. but interview actually start हुआ था 10:40 a.m. को. I have to wait for almost 20 to 25 minutes and interview की ड्यूरेशन रही थी हाफ एन आवर. उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ द एचआर मीन्स एचआर हैज इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एंड ही वाज अ वेरी कूल पर्सन. ही गेव हिज ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड आस्क्ड फॉर माय सेल्फ इंट्रोडक्शन. सो सेल्फ इंट्रोडक्शन में यू हैव टू मेंशन योर बैकग्राउंड, क्वालिफिकेशन, your important project, internships, and your short-term goals. Some people also mentions hobbies, but the duration should be less than 1 minute. So 40 seconds से लेके 1 minute तक का self introduction होना चाहिए. Then the second question was very obvious. Explain your project. So in this case, they HR asked me to explain my BTech capstone project. Also, in my self introduction, I have mentioned one more project, which is automatic paid feeder. For that, we got state level consolation prize. So HR asked me to explain that projects also in short. So like this. So next, the questions on projects like, are you team leader in your projects? So obviously everyone is saying that yes, I am the team leader. So how you manage the team conflicts as a team leader? How you manage the conflicts between your team members? So this is also obvious HR question. Problems faced by you as a team leader. So you have to explain the problem as a team leader. What problems you faced as a team leader, not other problems. And then technical problems faced by you in your project. So ये मुझे वो कॉन्सोलेशन प्राइज वाला प्रोजेक्ट के लिए पूछा गया था कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या फेस हुए थे. सो दैट प्रोजेक्ट वी हैव डिड इन our we had did in first year. So that time the project is based on IoT, so learning about this internet of things and many other technologies, sensor integration. These are the problems which I had highlighted. So ऐसे smart answers आपको देना है because they are asking you कि कौन से साल में प्रोजेक्ट किया था. So first year में you are not saying that कि मुझे IoT आता है, मुझे AI आता है. फोर्थ ईयर में आप कह सकते हो कि सर AI का थोड़ा बहुत आता है. फर्स्ट ईयर में कैसे कहोगे? सो दैट कैन बिकम अ टेक्निकल प्रॉब्लम. पाइथन प्रोग्रामिंग नहीं आती, जावा प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, तो वो सीखी, तो दैट प्रॉब्लम और उसको स्मार्टली हमने हैंडल किया. तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे. देन वन बेस्ट एडवाइस गिवन टू यू रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट. दिस इज वन क्वेश्चन विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड. सो ये पूछा. फिर मुझे पूछा कि योर फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है. तो मैंने कहा मशीन लर्निंग. एंड अनफेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है. तो इसके लिए मैंने प्रिपेयर किया था. वो कहा मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का. सो उन्होंने पूछा क्यों, ये अनफेवरेट क्यों है. सो द आंसर यू शुड गिव लाइक जो मैंने दिया था वो कि सर एक्चुअली इन 12th ऑल्सो वी हैड लर्न अबाउट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इन फर्स्ट ईयर ऑल्सो देर वॉज अ सब्जेक्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स where also I had learned so much of concepts and it is a repeated concepts again. So that's why it's my unfavorite subject. So उन्होंने पूछा तो फिर ऐसे तो तुमने उसको पूरा साइड कॉर्नर कर दिया होगा.
तो मैंने बोला नहीं सर, आई गिव लेस फोकस टू दैट सब्जेक्ट बिकॉज दैट सब्जेक्ट इज इन आवर सेकंड सेमेस्टर एंड दैट सेमेस्टर वी हैव C++ प्रोग्रामिंग. सो एज बीइंग फ्रॉम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, माय एरिया इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मुझे C++ प्रोग्रामिंग को प्रेफर करना था. सो लाइक दिस आई मैनेज टू गिव द आंसर्स. देन उन्होंने पूछा कोर्सेस यू डिड अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स. सो जो मैंने इंटर्नशिप्स की थी IBM में, वोडाफोन आइडिया फाउंडेशंस में, वो कोर्सेस मैंने AI के फील्ड में किए थे, वो पूछे. देन ही आस्क्ड मी अबाउट योर इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट्स. सो मैंने कहा सर आई हैड डिड 3 इंटर्नशिप्स, आई ऑल्सो मेंशन्ड इन माय रिज्यूमे. So during that I did a lot of contacts only during that phase कि उसी internships के दौरान मेरे जो contacts बने थे, that contacts only I had mentioned. उसके बाद बावजूद मेरा कोई contacts नहीं है, I am not from industry background, मतलब मेरे कोई relatives नहीं है उसमें, ऐसे करके उन्होंने पूछा. Then उन्होंने एक funny question पूछा कि why do you want to be in AI and cloud domain only, मतलब your resume, your everything is AI के इर्द गिर्द ही घूमती है, क्यों? तो मैंने वहाँ के कहा कि इट्स माई पैशन AI, आई फील कंफर्टेबल इन AI, आई लाइक टू लर्न मोर अबाउट AI, आई वांट टू डू रिसर्च इन AI. बट उसके अपार्ट मैंने जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की है, जो मैंने अपने रिज्यूमे में मेंशन की है, दैट एक्टिविटीज़ भी आप चेक कर लो, मैं उसमें भी अच्छा हूँ. जैसे मैगजीन का कोऑर्डिनेटर हो, NSS कोऑर्डिनेटर हो, कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव, so much of things I had did apart from academics in my college, so that I had mentioned over there. Then थोड़ा सा अभी मुझे याद नहीं है, 1-2 क्वेश्चंस पूछे थे. फिर लगभग 30 मिनट्स का टाइम हुआ तो उन्होंने पूछा कि एनी क्वेश्चंस फॉर मी. तो मैंने पूछा कि सर व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस विद एक्सेंचर व्हेन यू जॉइंड फर्स्ट टाइम. So he is having almost 20+ years of experience and Accenture के साथ 7-8 साल का experience था. So he just explained me the things कि you will get these kind of things and company is good and all that. उसके बाद 5 minutes का we had discussion कि how the life of corporate employees before COVID-19 pandemic it was, and after COVID-19 pandemic what impact that pandemic has on that, the culture of hybrid work from home, like these things we have discussed, and it is go very smoothly manner, friendly zone में उन्होंने अच्छे से बात की, and he has explained everything very good. And after that discussion उन्होंने मुझसे पूछा do you have anything to discuss with me or should we stop. So मैंने कहा no sir, it's okay, fine from my side. So he just say it's very nice conversation with you, and if you have any kind of doubts you can still ask. So मैंने कहा नहीं sir. So उन्होंने leave किया मीटिंग को, and I was very happy, I was smiling because मैंने सारे questions के answers दे दिए थे. So like this. So what are the key takeaways from my interview? The first one is you have to prepare your resume and your self introduction well. Communication is the key of your interview. The way you communicate with others, this thing determine your selection or not. Be very confident, have a very happy smile, happy face, smile on your face. Listen to their questions very appropriately, and later on just try to think on that question. Just show that, take pause for 1 or 2 सेकंड. ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन पूछ ले, एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, ढक से तुमने स्टार्ट कर दिया. टेक अ 2 to 3 seconds of pause, show like you are thinking on that, and then explain your answers and be very crisp and short. Explain everything in detail if they expect from you, and rest of the things just keep aside. Whatever, if you are feeling like a tensed and all that, it is negative impact. Don't fumble, एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन में फंबल नहीं करना है. माय नेम इज सत्यजीत, आई हैव डिड व्हाट इज दिस. यू आर गिविंग योर सेल्फ इंट्रोडक्शन, यू डोंट, you can't even speak for 1 minute in English on your own introduction. So this is a very negative sign. So self introduction अच्छे से prepare करो. Projects you have to prepare everything in detail. You can expect technical questions or not any other HR questions for your projects, and you have to prepare other things. So वो resume चेक नहीं करते, वो आपके सेल्फ इंट्रो से या बातों से ही आपको चेंज करते हैं. एक्सेंचर के क्वेश्चंस बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं, इंटरनेट पे सर्च करोगे मिल जाएंगे. प्रिपेयर करके जाओ, बस रट के मत जाओ, एक बेसिक आंसर मन में रखो, एंड यू जस्ट स्पोक ओवर देयर. You just freely express whatever you feel, but don't try to speak like
you are speaking something which is unethical. So in this part, I just want to say this is all about my Accenture interview, and thank you so much for listening to this. And if you want more content, please follow us. Thank you.